या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑल द ट्रेडर्स। आज जो आपने देखा है कि मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग तो दिया है, जो हिसाब से एक्सजीएस निफ्टी भी हमें दिखा रही थी, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आप देखा, आई जस्ट प्ले इट ऑन माय मोबाइल, यू जस्ट सॉ दैट बैंक निफ्टी ने एक डिप दिया वहां से। सो आई थिंक आई वेट फॉर सम टाइम। इज द स्ट्रीम स्टार्टेड? Yes, it has started. I don't know why you are not getting it. Yeah, on my mobile it's showing everything is fine. Please check at your end and confirm. Anand, yeah, at my end it's showing that the stream has started. Yeah, I'll wait for all to confirm. Yes, okay, yeah. So आज का market था was quite predictable in the sense that SGX Nifty did show a gap up. We reached the resistance. How many of you observed the levels we had discussed yesterday? Sorry, in the morning. And then Bank Nifty did not end at higher levels. So before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's start on the 20 तारीख को ट्रेंड क्या है, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शंस डेटा हमें क्या दिखा रहा है. And let's see the market in the overall context of the short-term swing setup. So let's start. So now I guess everybody's getting my audio video loud and clear. Today I have one screen, so I have to toggle between this. Okay. Shashank says yes. Okay. Now, this is Nifty. See, two things can happen. Number one, हम लोग एक gap follow कर रहे थे. Did you all remember? This gap has been filled. But today's candle, it's showing a doji star sort of a candle. इतना confidence नहीं आ रहा, because we would have loved to have a hammer or a reversal pattern which marks a low or a bullish engulfing. So it's a star pattern which signifies indecision. All we can say, this gap has got filled. Now, second thing is the 200-day exponential moving average जो हम follow करते थे, अभी भी आपको उसको छोड़ना नहीं है. So if I go over here and plot the 200-day exponential moving average, अगर आप देखो तो मार्केट 200-day exponential is way up here, 24,400. देखिए, कोई भी जो अपस्विंग शॉर्ट टर्म में जो आता है ना, पुल बैक, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. उससे पहले व्हाट वी हैव इज द 50 पीरियड मूविंग एवरेज. मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन. सो अभी 50 डीए को विप्सॉ करेगी मार्केट्स. तो एज अ ट्रेडर आपको करना क्या, एक या क्रूड इज अप संजय, all you have to define in this range. So this 200 DA में और ये पूरा एक स्टार ले लो. Right? So both were the star candles. So I think more or less Nifty एक ये range में रहेगी. So I'm not expecting either within this week a big break on the upside or a big break on the downside. How many of you agree? Give me a yes or a no. Because ये देखिए काउंटर ट्रेंड है, पुल बैक है. I'll wait for your either a yes or a no, friends. Yes. So in between देखिए आपको, you have to pick up days which we are good, you have to pick up days which are bad. Now यहाँ पे जो resistance है ना, please mark here, this is your 200-day exponential moving average. बीच में एक pivot point या fulcrum point है या 50 DA में. So now we'll have that sort of a volatility with that. Yeah, नमस्ते कमलेश जी. और अगर मैं पूरी ये चैनल भी बनाता हूँ, आई थिंक यस इट्स स्टिल वैलिड. एक दिन का विप्सॉ हुआ था. सो मार्केट एक बैंड में रहेगा. कभी क्या होता है ना, गैप के बाद हमें एक बार जोर से रिवर्सल देखने मिलता है, जैसे यहाँ पे इस तरह. वो हिसाब का अभी कुछ दिख नहीं रहा है. So be prepared for range bound volatility between 24,400 and 24,000. So again, we are stuck in a 400 points range. That's what the price charts are showing. Right.
So now this range, I'll create the band which we use. So band इसलिए yellow में आते हैं ना, तो it's very distinctively you can see it on your price charts. All we can say is prices took support at the gap. Generally, we would have loved to say that prices took support at the gap and we are seeing some reversal, but the candle itself is, we'll have to wait. Will it turn out to be a three candle pattern or something which shows us that we are out of this drift? Right now, the drift which has started from here, it's in a continuous mode. इसमें कोई change नहीं आया, right? So there is no change whatsoever in this drift. So ये जो drift था ना, it is continuing. All you can say spike on the upside, then it will continue. We need to see a clear break from here. So which has not happened so far. Everybody clear about the pattern part of it? I'll wait for yes or a no. Yes. Now एक बार हम weekly देख लेते हैं. देखिए वीकली हम इसलिए देख रहे हैं ना, बिकॉज वीकली में क्या हुआ, एक अभी तक आज की तारीख में वीकली का जो कैंडल है वो अभी तक हैमर दिखा रहा है. सो दैट्स द ओनली पॉजिटिव फॉर द मार्केट कि गैप से जो मार्केट ऊपर आया है वहां पे एक हैमर है, बट वीक अभी खत्म नहीं हुआ और एक दिन कल का दिन बाकी है. सो दैट्स द ओनली पॉजिटिव विच आई कैन से राइट नाउ. सो दिस विल सी मोर आफ्टर टुमारोज क्लोजिंग के बाद देखते हैं क्या ये हैमर इंटैक्ट है. अगर हैमर इंटैक्ट है दैट मीन्स we have seen a low in the short term, and again we will be in the broader range. Right now we can't even pinpoint this range, right, the big range. If the hammer is confirmed तो range का ऊपर का दायरा बढ़ जाता है. Right now it's no, we are in between this. Plus देखिए Bollinger Bands में if I see ना, it's still below 200 DMA. Now this is 200 DMA, sorry 20 DMA. So see a reversals or a swing up, the bare minimum criteria, either we wait for a bullish reversal patterns or we wait for a close above the 20 DMA. Till that's not happening, अभी prepared for intraday gyrations. जैसे आज खुला ऊपर, फिर बैंक निफ्टी नीचे आ गया, गैप इंटैक्ट रहा, कल हो सकता है एक डिप भी आए, साइडवेज रहे, ऊपर जाए. So still we are not out of that day traders market. How many of you agree? Okay. Yeah, Dheeraj is the only one saying yes. So market is trying to find a low, yet has it found? No. देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना, once we fill this gap, okay, then we had a basing over here, okay. Now once we filled a gap over here, ये जो gap भरा था ना, here you had a bullish reversal candle, okay. Now the same way market ने यहाँ पे gap भरा है, बट यहाँ पे गैप पे इट्स टू अर्ली टू से व्हाट विल अनफोल्ड. देखिए ये गैप पूरा भर गया. सो विल वी गो लाइक अ कंसोलिडेशन इन वन. राइट नाउ इट्स पॉइंटिंग आउट टू दैट टू में सिंगल डे में रिवर्सल था विच इज नॉट देयर. सो लेट्स लेट एंड टुडेज दोजी क्रॉस जो दिखा रहे हैं, दोजी क्रॉस इज आल्सो शोइंग दैट इंडिसिजन था. खुलने के बाद मार्केट में एक उछाल आया नहीं है. So that means after a gap up opening, participations from the buy side was not there. That we can conclude. So my vote will be for one. What do you think, everybody? One or two? The logic for one is I have not got a reversal candle. आज gap up हुआ. So will it be a 3-star candle? Which means कल देखते हैं gap down हो रहा है कि नहीं. Dheeraj says one. Sanjay says one. Sridhar says one. Okay. But even in this one, you see, initially you had this big moves to 300 points. So that is possible. For that, why we are marking this resistance, which is a 200-day exponential moving average. Okay. So that's how Nifty is. Probably come and fill the lower gap. Sanjay, is possible.
Yes. So you are waiting for this gap, Sanjay. That is also possible. But let's wait for that. And now let's have a look at Bank Nifty. बैंक निफ्टी देखिए आज ऊपर जाके डिड नॉट सस्टेन एट हायर लेवल्स, तो ये तो क्लासिकल मुझे एक सेलिंग पैटर्न दिख रहा है आफ्टर पोस्ट अ गैप अप इट डिड एंड मॉर्निंग में रिमेंबर वी हैड मार्क दिस लेवल ऑन बैंक निफ्टी. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट लेवल. चलिए ये लेवल मार्क किया था, खुला है उसके ऊपर, देन वी सेड गोइंग अबव दिस हाई लुक्स टफ फॉर मी टुडे. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? लेट मी सी कितने जन को याद है ये लेवल. I'll wait for somebody to say yes. And then we said there would be a fading into the gap. ये जो gap है ना, so what happened? Market faded into the gap. So classical setup था आज. It was a classical fade in the gap. So बहुत बार क्या होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस चेज मत करो, जाने दो उसको रेजिस्टेंस पे, थकने दो वहां पे, रुकने दो एंड देन टेक योर ट्रेड. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज ओपनिंग के बाद आप इसके लिए ट्रेड करते हो, दिस स्मॉल लिटिल मूव, और फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. So don't have that. Fine. I think in the morning, absolutely yes. So that was Nifty and Bank Nifty. Now Bank Nifty को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. देखिए बैंक निफ्टी की जो कैंडल पैटर्न आए ना, वो कहीं ना कहीं it's a bearish candle, no doubt about it. A candle with a big tail on the upside. इस तरह की कैंडल देखिए यहाँ पे भी आई थी. Notice this. And same sort of a candle, I'm seeing it right now over here also. So what does it tell you? That wait and watch. Don't jump to much of the conclusion. Okay. See, bearish candle needs confirmation, which means कल का दिन देखते लो टूट रहा है कि हाई टूट रहा है. Now बैंक निफ्टी में हम 200 डे एवरेज फॉलो कर रहे हैं, which is the simple moving average. Let me go and plot and see where the 200 day simple moving average is. 200 डे सिंपल आज गैप अप किया, फिर क्लोज वहां पे किया. So what Bank Nifty is doing is it's just whipsawing the 200 day moving average. Friends, it's not clearly breaking out above it and below it. वो whipsaw कर रहा, which means यहीं पे एक 500 पॉइंट के दायरे में एक वॉलेटिलिटी बैंड क्रिएट कर दिया बैंक निफ्टी ने, which is this one. ये हाई से लेके ये लो तक, and I'm expecting it to remain there. Now another somebody might say चैनल टूट गया, बट क्लोजिंग उसके अंदर हुआ. Watching this everybody, but on closing basis it has closed below that. So range bound volatility intact है. और एक दिन मार्केट को देख के देखते कि क्या मार्केट इज लाइकली टू मूव आउट एंड गिव लाइक दिस, और market will be still stuck in this range for some time before it makes up its mind. Right now तो market का mood वही है कि मैं volatile भी रहूंगा और एक range में भी रहूंगा. That's the message which market is sending out very very loud and very very clear. Right? So that's about today. How many of you are watching stocks also? If you remember हमने एक पॉइंट किया था, आप स्टॉक्स देखो. देखिए मार्केट रेंज बाउंड है तो स्टॉक्स में ध्यान दो. दिस वाज डिक्सन. इफ यू कैन रिमेंबर वी हैड सीन डिक्सन आई थिंक 8-10 days बैक. देखते कितने जन को याद है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के. डिक्सन में क्या हो रहा था, एक अच्छा सा एक फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा था डिक्सन में. And before that, the real confirmation was here only, this bullish flag. How many of you remember Venkat says yes? Yes. Dixon was also there. So look at some of the stocks. Yeah, VIX at lower levels, Sridhar. VIX will discuss tomorrow morning session. Right? Sridhar will discuss VIX tomorrow morning. And today 4:30 to 5:30 we are having this session. Make sure you are there on the volatility part of the sessions. How to define a volatile range with ATR, straddle price, and also what we call VIX index. So that's all from my side. Thanks. Have a nice day, everybody.